बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वजाहत सईद खान। पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खोले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज वाशिंगटन डीसी के नाम। अब से चंद घंटों बाद, सिर्फ चंद ही घंटों बाद, एक ऐसा लम्हा जिसका बहुत सारे पाकिस्तानियों को इंतजार था, रियलिटी में बदल जाएगा। लोकेशन होगी वाशिंगटन डीसी में अमरीकी कांग्रेस, मतलब अमरीकी पार्लियामेंट। इवेंट होगा एक सेनेट फॉरेन रिलेशंस सब कमेटी की हेयरिंग, जिसमें पाकिस्तान में अभी जो इलेक्शंस हुए हैं वो, और पाकिस्तान का अमेरिका के साथ जो फ्यूचर है उसको डिबेट किया जाएगा, उसके ऊपर जांच पड़ताल की जाएगी। हालिया तारीख में पहली बार ऐसी हेयरिंग हो रही है। 10 से 15 कांग्रेसमैन, जो आप कह सकते हैं कि इधर के एमएनएज होते हैं, वो इस शख्स से, डोनाल्ड लू से पूछेंगे कि अमेरिका ने पिछले 2-2.5 सालों में पाकिस्तान के साथ क्या किया है और आगे क्या करना है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए क्योंकि ये पहली बार है कि पाकिस्तान के बारे में अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन का अब तक हाईएस्ट ऑफिशियल, जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू हैं, टिल डेट पाकिस्तान के बारे में ऑन द रिकॉर्ड कसम खा के कमेंट्स करेगा कि क्या गलत चीजें हुई हैं, क्या ज्यादतियां हुई हैं और आगे क्या होना चाहिए। अगर आपने हमारा पिछला व्लॉग देखा है तो आपको पता होगा कि ये स्टोरी हमने ब्रेक की थी कि डोनाल्ड लू क्या कहने वाले हैं। इनकी जो स्टेटमेंट है वो सबसे पहले हमने आपको दी थी और इनकी स्टेटमेंट में हमने ये वाजे किया, इन्होंने ये वाजे किया कि ये ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। नॉट मच इज इन हिज स्टेटमेंट। ये कहेंगे कि इलेक्शन में कुछ इश्यूज थे, ये कहेंगे कि इलेक्शन लार्जली कंपेटिटिव था, ठीक ठाक था, और अब क्योंकि पाकिस्तान एक अहम पार्टनर है अमेरिका का, पाकिस्तान को आगे चलना चाहिए, हम भी आगे चलते हैं और पाकिस्तान का साथ देते हैं। और फिर जब इनकी स्टेटमेंट खत्म होगी तो फिर जो 10-15 कांग्रेसमैन हैं वो इनसे सवाल जवाब करेंगे और ये एक अहम मोमेंट होगी। शायद अगर इनके सवाल जवाब गड़कते हुए हों, गरजते हुए हों, अच्छे हों, एजुकेटेड हों, तो शायद इस सवाल जवाब के दौरानिए में साइफर का इशू, जिसने पाकिस्तान का तख्ता इमरान खान का बकौल पीटीआई के उलट दिया था, पाकिस्तानी सियासत में अमरीकी मुदाखलत का मुद्दा, वो पाकिस्तानी फौज को अमरीका कैसे सपोर्ट करता है, वो इशू, और पाकिस्तान के क्रैकडाउन के बारे में और इलेक्शन फ्रॉड और रिगिंग के बारे में अमेरिका का मुजरिमाना, जो अमेरिका की मुजरिमाना खामोशी जो रही है, वो, ये सब चीजें जो हैं शायद पूछी जाएंगी। इस हेयरिंग से क्या होगा? What will this hearing achieve? Will it trigger an investigation into the election fraud? क्या कोई इन्वेस्टिगेशन लॉन्च होगी? अमेरिका क्या ये मुतालबा करेगा कि पाकिस्तान फौरी तौर पे जो हैं सब फॉर्म 45 और फॉर्म 47 को हमारे सामने पेश करो, या कम से कम अपने जजों के सामने पेश करो, या कोई रेजोल्यूशन होगी पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, या कोई सैंक्शंस लगेंगी पाकिस्तान के जर्नैलों पे, कर्नैलों पे, पाकिस्तान के जजेस पे, इलेक्शन कमिश्नर्स पे, या कोई रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी जैसे ट्रैवल या वीजा रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं, या इनके अकाउंट बंद हो जाएंगे। क्या होगा? कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब कांग्रेशनल हेयरिंग होती है तो ये होता है। और डोनाल्ड लू को से क्या पूछा जाएगा? क्या उन्हें क्लीन चिट दे दी जाएगी, जैसे उन्होंने ऑलरेडी अपनी स्टेटमेंट में पाकिस्तानी गवर्नमेंट को और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को खासतौर पे एक क्लीन चिट दे दी है, या उनके कान पकड़े जाएंगे और उनसे पूछा जाएगा कि ये सब क्या हुआ है और तुम लोग जो है, ये तुम लोगों ने, तुम्हारे स्टेट डिपार्टमेंट ने, तुम्हारे दफ्तर खारजा ने ये क्लीन चिट पाकिस्तान के हुक्मरानों को क्यों दी है? आज के महाज में हम अमरीकी जो मुदाखलत है, अमरीकी जो इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान की सियासत में, उसके बारे में आपको बताएंगे, और एक ऐसे शख्स के जरिए बताएंगे जो इस हेयरिंग के ऑर्गेनाइजर्स में इंक्लूडेड है। इस शख्स की वजह से आज ये हेयरिंग हो रही है। शुरू करने से पहले शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट। आपकी मदद से आज मैं 4 लाख सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर गया हूं। प्लान यही है कि इस महीने 5 लाख सब्सक्राइबर्स जो हैं वो मैं रीच करूं। इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म आपकी आवाज है, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म आपकी सपोर्ट पे डिपेंड करता है।
मेरे गेस्ट जो हैं वो अंग्रेजी में बोलेंगे, मैं साथ साथ कोशिश करूंगा कि तर्जुमा करूं. Now, on to our show. To answer these difficult questions, I am joined by Erik Sperling. Erik, you are the boss over there at Just Foreign Policy, which is trying to do the right things for US foreign policy. You are at Erik Sperling on Twitter. People can follow you and your recent interest in Pakistani politics. You also spoke today at the National Press Club in Washington, D.C., where the action clearly has already begun. Now, it's just a few hours to this hearing. And this is my first question, Erik. Donald Lu is a sophisticated operator. He knows what he's doing. And he's one of the best the State Department's got to get out of situations like this one, which is this hearing. Will he be honest? Will he be forthcoming? Or will he try to defend the criminal silence of his bosses? And then what will all those congressmen and women do? Will they take him to task, or will they work with the system and everybody will go to lunch by the time this hearing's over? The floor is yours. Yeah, well, thanks for having me. I think you've really hit the nail on the head. It's very unclear exactly how the hearing's going to go. Certainly Donald Lu, I think, feels very comfortable in this setting. As he said in his statement, which I think a lot of your viewers probably reviewed, I think you did analysis of that statement. He referred to being a junior officer in Pakistan over 3 decades ago. So this guy has a lot of experience in the country. And, one of the challenges that we're going to see is that very few members of Congress, even on this committee, are going to have even a fraction of the knowledge that he has. So that's one of the challenges. And I think as folks saw in the statement that he submitted just for his opening, that'll be his opening remarks, which is very carefully crafted. They spend a lot of time on getting these just right. He's critical of what happened, but not so critical that it makes news or that it's seen as a rupture with Islamabad, for example. And so I think that's going to really be characterize a huge part of the hearing. And the question will be, do these members of Congress word questions? Do they press him in a way that, forces him to say something interesting? And what we're looking for in this hearing is, an indication that, where he's, I think a lot of your viewers are obviously extremely educated about the situation. And so if he says something that is completely out of step with reality in a very blatant way, that can make headlines and that can create momentum that U.S. policy is not really reflecting reality. At the same time, if he's very critical and says something accurate about the situation, that will be perceived as will make people very nervous in terms of the Pakistani establishment. So, I think a few other dynamics are that, you do have a partisan dynamic here a bit, particularly in the Foreign Affairs Committee, where, Democratic Party staff and members are going to be very inclined to, want to, treat him respectfully, treat him well. And because a lot of them are in the same career track. When you work in House Foreign Affairs, that's a similar career track to the State Department. And so that's one dynamic. And then we'll also see, how willing are these Republicans going to be to hold someone of another party accountable and kind of serve their constituents that way. I think they will be inclined, some of them, to do that. But then the question is, how much do they really care about Pakistan? How much can they show that? And I will just say, the House Foreign Affairs Committee is not a place where our most thoughtful, progressive, compassionate members about foreign affairs sit. In fact, it's quite the opposite. It's going to tend to be those members who are more focused on advancing U.S. interests and doing so in a strategic way. So I think, that's the general state of play about I think what we're looking for tomorrow. And I think we're hoping that, there's something there that, whether he reflects some of the truth about what has happened, which we can cite and the media can cite, or if he just is really shameless in terms of hiding what I think the vast majority of Pakistanis and any observer watching it saw during that election. Nice. Very well put. Now, here's what's going to happen. I'm going to take a couple of minutes and try to paraphrase that brilliant assessment just to kick things off. Erik Sperling, जो Just Foreign Policy को head करते हैं. By the way, Just Foreign Policy एक ऐसा advocacy rights group है जो कोशिश करता है कि अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है वो जस्ट हो, मतलब कि वो इंसाफ वाली हो. तो आप कह सकते हैं कि अमेरिका की जो खारजा पॉलिसी है उसकी ये तहरीक इंसाफ आप कह सकते हैं हेड करते हैं.
یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈونلڈ لو جو ہیں واقعی بہت ایکسپیرینسڈ ہیں اور جو لوگ ان سے سوال کر رہے ہوں گے کل ان سے زیادہ ایکسپیرینسڈ ہیں پاکستان کے بارے میں. وہ کرٹیکل ہوں گے, تنقید کریں گے, مگر زیادہ تنقید نہیں کریں گے کہ پاکستان کی جو ریاست ہے اس کے ساتھ کوئی پھڈا پڑ جائے, کیونکہ یہ سفارتکاروں کا کام ہوتا ہے. اور وہ اگر سچ بولیں گے تو ہیڈ لائن بن سکتی ہے, اگر زیادہ ہی سچ بول دیا تو ڈیفینیٹلی ہیڈ لائن بن سکتی ہے, اور اگر جھوٹ بولیں گے, اگر غلط بیانی کریں گے تو آبویسلی سسٹم ایسا ہے, لوگ بیٹھے ہوں گے کہ وہ بھی ہیڈ لائن بن سکتی ہے, اسپیشلی پاکستانیز جو آڈینس میں بیٹھے ہوں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر زیادہ تر جو کانگریس مین اور ویمن ہیں وہ ڈیموکریٹک سائڈ سے, جس پارٹی سے یہ تعلق رکھتے ہیں کیونکہ یہ ڈیموکریٹک ایڈمنسٹریشن میں ہیں, وہ پرابلی ان کے ساتھ جو ہے وہ نرم دلی کا اظہار کریں گے, اور جو ریپبلکنز ہیں وہ تھوڑا سا شاید, کیونکہ وہ دوسری پارٹی کے ہیں, وہ شاید ڈنڈا ان کو دکھائیں. مگر ایک چیز انہوں نے کوالیفائی کی ویری امپورٹنٹلی کہ جس قسم کے ممبرز ہیں فارن ریلیشنز کمیٹی میں, جس قسم کے کانگریس مین اور ویمن ہوتے ہیں, وہ عبدالستار ایدی ٹائپ این جی او ٹائپ نہیں ہوتے, وہ بڑے کمپیشنیٹ نہیں ہوتے, ان کے دل زیادہ بڑے نہیں ہوتے. وہ جو ہارڈ نوز قسم کے یو ایس فارن پالیسی انٹرسٹ جو ہیں, جدھر امریکہ کی خارجہ پالیسی پہلے آتی ہے, وہ اس کو پروموٹ کرنے کے چکر میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے ایک ایسا کراؤڈ ہوگا جو امریکہ فرسٹ ٹائپ قسم کے لوگ ہوں گے جو ریپبلکن پارٹی میں اسپیشلی آج کل ہیں. So that was my take on your first take, Erik, in Urdu, and you can have your best analysts cross-check about where I went south with that paraphrasing. But second question, real quickly, what's the best case scenario in this? What's the worst case scenario in this? What's a good thing which can happen, and what would you rather not happen in this hearing tomorrow, considering so much time and effort has gone into making this happen? Yeah, well, I think the best case scenario is that a few members of Congress who are close to the Pakistani American community and have learned about the basics of what's going on, all you really need to know are the basics to care about this, because it's one of the most obvious, just a kind of almost a caricature of an election rigging. But that a few members of Congress on each side, really get into questions and do follow-ups appropriately in a way that kind of catches him in what I think most of us know is kind of a U.S. policy that's very hard to defend upon limited, minimal scrutiny. So that's the best case scenario. Some media moment that one way or another, whether it's him, being honest about what took place in some way and in a way that he maybe didn't intend to under tough questioning, or him, saying something so embarrassing that the Pakistani people back home say, these, really are even more shocked than they have been about what he's saying. So I think that's the best case scenario. And it's all part of this ongoing effort to really educate members of Congress for the first time about this country in an era where there's a lot more Pakistani Americans here. And so I think, one way or another, the goal would be to, shine more light on the situation and have momentum coming out of the hearing for the next steps to continue turning that pressure up on the Pakistani establishment and beginning to move towards restricting U.S., certain types of U.S. support, especially military cooperation and other things that the Pakistani establishment very much wants to have. Right, got it. Let me give this a shot again. This time, اس بار میرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ کیا اچھی چیز ہو سکتی ہے اور کیا بری چیز ہو سکتی ہے اس ہیئرنگ میں, مطلب کیا اچیو کر سکتے ہیں اور کیسے ہیئرنگ جو ہے وہ ٹھپ ہو سکتی ہے. اس پہ ایرک نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکی کانگریس میں یہ ڈیبیٹ ہوگی, امریکی کانگریس کے فلور پہ یہ ڈیبیٹ ہوگی اور بیک اینڈ فورتھ ہوگی اور تو میں بھی شاید ہو, اور شاید کوئی میڈیا مومنٹ جو ہے جس سے ہیڈ لائنز بنے, جس سے پاکستان کی جو الیکشنز ہیں, پاکستان کی جو یہ حالت ہے, جو کریک ڈاؤن ہے, یہ ہیڈ لائنز میں آئے. کیونکہ ایک خسارہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ میں زیادہ ڈیبیٹ نہیں ہوتا. پاکستان جو ہے ویسے تو بہت امریکی مداخلت تو پوری دنیا جانتا ہے کہ امریکہ کی کیا انفلوئنس ہے پاکستان میں, مگر ادھر ڈیبیٹ نہیں ہوتی. وہ ہو جائے گی اسپیشلی اگر ڈونلڈ لو نے کوئی بھنڈ مار دیا.
मगर साथ साथ ये भी कहते हैं कि अगर वो अचीव भी नहीं हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता जो प्रेशर है वो बिल्डअप होगा, सैंक्शंस पे, रिस्ट्रिक्शंस पे, वो चीजें जो ऑर्गेनाइजर्स चाहते हैं। शायद सब चीजें कल ना मिलें, मगर आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली, ग्रेजुअली ये एक मोमेंटम है जो इंक्रीज होगा और फौज पे और एस्टैब्लिशमेंट पे दबाव होगा। Which brings me to my last couple of bits. So, Eric, what are the learnings for this, for the organizers? What are the learnings for this for the Pakistanis, the Pakistani Americans, independent activists and organizers like yourself who are shooting for a just foreign policy from these great United States? What can be learned? Because the Pakistanis, let's just be very honest, the Pakistani diaspora and the organizers aren't as organized as, for example, the APAC guys are, or the IPAC guys are. I'm talking about the Jewish lobby, or the Israeli lobby, rather, or even the Indian lobby. Those guys do a much better job and have had their house in order much longer. They know the tricks of the trade. Do you think this is that starting point for the Pakistani diaspora? Do you think there's lessons to be learned here, or will everybody just pack up and go home after this is all over? Yeah, well, we've seen this in practice, and I mean, it's not the first group that we've worked with. U.S. foreign policy. One of the reasons it's so hard to change is because there's so many problematic U.S. foreign policies. I mean, you can imagine how much activism is going on right now around Gaza. Hundreds of thousands of people in the country taking action, and still very limited results. But that one, of course, you have a lobby on the other side. But we've definitely seen incredible, you only learn this strange world of Washington, D.C. by engaging in it, and by, learning how staffers think, members of Congress think, learning the tools, the different strategies. And, and we've seen huge growth there. And, I think, speaking of kind of the worst case scenario, the only really worst case scenario that could come out of this would be if somehow, he manages to demoralize and make Pakistanis feel, we're not winning, we're not able to keep going. Let's slow down. Let's maybe go back to our lives and stop pushing for democracy. And that would be the only downside. But as long as the Pakistani community, both here and around the world, and back in Pakistan, continue to feel motivated and energized, it's only going to get stronger. There's basically no way that over time, they're not going to keep creating, more, there's a bigger base of knowledge and awareness among staffers and members of Congress every time. And they're taking bolder and bolder positions that are closer to understanding the reality of the situation. So, I think that's very encouraging, and it really is in its infancy. So, it should be more progress in the near future, regardless of how the hearing goes. Right. एरिक फरमाते हैं कि जो लॉबिंग है वो करनी पड़ती है, ये कोई ऊपर से नहीं आती, घुसना पड़ता है वॉशिंगटन में, एक्चुअली लर्न करना पड़ता है, लर्निंग बाय डूइंग जिसे कहते हैं। इन्हें एक्चुअली जब तक आप ये गलतियां नहीं करेंगे, शायद कह रहे हैं कि कल कुछ ना हो, शायद जो है ये सब कोई बहुत बड़ी कोई रेजोल्यूशन ना हो, कि कोई बहुत बड़ा कोई छक्का ना मार दे यूएस कांग्रेस में जो हेयरिंग है। मगर वर्स्ट केस सिनेरियो जब होगा जब पाकिस्तानी डिसअपॉइंट हो जाएं और कह दें कि नहीं बस चलो जमहूरियत खत्म, हम खत्म। ये कहते हैं नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली कहते हैं कि एक ये स्लो प्रोसेस है और इसमें जो बेस है, जो नॉलेज है, अब वॉशिंगटन डीसी में पाकिस्तानी पहली बार, हालांकि पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तानी जमहूरियत के साथ बहुत ज्यादतियां बड़ी दहाइयों से हो रही हैं, मगर पहली बार जो है एक मुनज़्ज़म एक तहरीक है वो घुसी है वॉशिंगटन में, और ये अल्टीमेटली एक अच्छी चीज है। ये फरमाते हैं एरिक स्पर्लिंग। लास्ट क्वेश्चन, इफ यू वर अ betting man, Eric, where would you put your money for tomorrow? I'm assuming that those Dems are going to give Assistant Secretary Lou a pretty easy time. I'm assuming that there is very little knowledge or interest about Pakistan and the nitty-gritty of it all when it comes to, as they say, I don't think these guys are going to get inside baseball when it comes to election discrepancies, et cetera, and I don't even think that they're going to talk to him much about that so-called cipher, which he was mentioned in prolifically, and which eventually led to what millions of Pakistanis believe was the overthrow of Imran Khan.
So, if you were a betting man, where would you put your money on outcomes? Really hard, fast outcomes. Should I expect sanctions by the end of the hearing tomorrow, or a follow up with Tony Blinken, maybe not in the subcommittee, but in the actual Foreign Relations Committee? Where would you put your money down? Yeah, I think that a good part of the hearing will probably feel a lot like you are reading, him recite his statement in many different ways over and over. I think that will be a good part of the hearing, but there are some potential for some highlights. We definitely have some Republican members who are friendly with the community and have learned at least some about it. And then you have members like Brad Sherman. Folks may have seen he did a tweet where he appeared to write it himself, and it said, first they banned the bat and then they banned the batsman, and it had the bat symbol and Imran Khan. He tweeted that. It appeared to be himself. So, he can often be a fiery, kind of exciting questioner. And then also Congressman Greg Casar is reportedly going to be joining the committee and asking questions at the end. And so, he's a real caring, thoughtful person who, supports basic democratic principles in U.S. foreign policy. So, I think we'll get some good moments. There'll be moments where we can point to that, I think are interesting to people. And there'll be a lot of other moments that people say, I think maybe are amazed at the power of the Washington, State Department spin machine. I know we all have been people, not just in Pakistan issues, but with Gaza and Israel issues, have been amazed at Matthew Miller at the State Department. I mean, that is their primary skill set, is being able to, advance U.S. interests while saying things like, just looking at his statement, he says, the Pakistani people deserve a country that is peaceful, democratic, and prosperous. We are working every day to support that vision. I mean, it's like, so you make him think, he's a revolutionary Pakistani leader. He's so committed to Pakistan. But in reality, of course, they don't even claim that or believe that. They're working to advance U.S. interests. But if they were to say that, they would be rejected. So it's going to be a lot of frustrating language like that, with punctuated by a few exciting moments, I think. Right. I'm going to wrap that up and then we're going to just take it from there. So यही कहते हैं कि बार-बार probably डोनाल्ड लू यही कहेगा. मैंने जब पूछा कि अगर शर्त लगानी हो कि कल क्या होगा एक्चुअली, तो कहते हैं कि डोनाल्ड लू बार-बार अपनी जबरदस्त अंग्रेजी में वो जो स्टेटमेंट में लिखा है, जो हमने ऑलरेडी आपके लिए चलाई हुई है, वही बोलेगा. और शायद कुछ ऐसे लोग हैं, ब्रैड शर्मन हैं, जिन्होंने एक ट्वीट की थी जबरदस्त कि बल्ला भी चला गया और बल्लेबाज भी चला गया. ग्रेग कजार हैं. ये ऐसे लोग हैं इस कांग्रेस में, इस हेयरिंग में, जो शायद तगड़े सवाल पूछें पाकिस्तान और जमहूरियत के बारे में, क्योंकि ये एक्चुअली सियासी तो अपने नजरिया इनका ऐसा है, मगर अल्टीमेटली जो क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं वो इंटरेस्टिंग शायद मोमेंट्स उसमें क्रिएट हो. मगर क्योंकि ये स्पिन मशीन जो इनकी है, ये सब स्पिन डॉक्टर्स, मशहूर जमाना स्टेट डिपार्टमेंट के स्पिन डॉक्टर्स हैं, रोने लगते हैं. जैसे मैथ्यू मिलर ने उस दिन गजा पे सवाल पूछा, तकरीबन वो रोने लग गए. हालांकि वो काम जो है वो वही कर रहे हैं कि अमेरिका का जो नेशनल इंटरेस्ट है, पाकिस्तान का नहीं, इजराइल का नहीं, गजा का नहीं, अमेरिका का नेशनल इंटरेस्ट जो है वो पहले आता है. वो अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट पे ही बात करेंगे और बाकी जो है ये काम जो है होता रहेगा. Erik Sperling, thank you for being a champ and bearing through with my paraphrasing. I hope we stay in touch, because the next few hours and the next few days will be important to follow up on, especially if we get the media moment that you project. Absolutely. Yeah, we'll be here to support kind of the efforts by Pakistani Americans, as long as they're fighting for their democracy and U.S. policy is in any way impeding that. We'll be here. So we'll look forward to staying in touch. I'm glad that the Pakistani democratic ethos has found a new friend in you. Erik Sperling of Just Foreign Policy. You tweet at Erik Sperling on Twitter, or X as it's called, and Just Foreign Policy can be followed on at Just FP. I will talk to you soon, my friend. Let's talk after the hearing. Take care. Sure. Take care. ये थे एरिक स्पर्लिंग. और अगर आप पाकिस्तानी निजात अमेरिकन हैं, इफ यूर अ पाकिस्तानी अमेरिकन, फिर आप इस साइट पे जा सकते हैं. ये एक टूल डेवलप किया है एट जस्ट फॉरेन पॉलिसी वालों ने. ये टूल जो है ये आपको अलाउ करता है कि अपने जो सवालात हैं वो आप मेंबर्स ऑफ कांग्रेस को, जो इस हेयरिंग में
डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछ रहे होंगे, अपने सवालात जो हैं वो उनको भेजें, अपने कंसर्न्स जो हैं वो उनको भेजें। शायद आप अपने जो अगर आपके पास कोई सबूत हैं वो भी भेज सकते हैं, जिनसे जो कल तू मैं हो कांग्रेस में, उसमें कुछ ठहराव भी आए, उसमें कुछ सब्सटेंस भी आए और उससे कुछ निकले। ये जो लिंक है ये हमारी डिस्क्रिप्शन में भी लगा हुआ है, आप लिंक जो है उसमें जाके फॉलो कर सकते हैं। मैं हूं वजाहत सईद खान। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करें। ये जो हेयरिंग है इसको हम फॉलो करते रहेंगे और आपके लिए अमेरिका से जो लेटेस्ट है वो खबरें लाते रहेंगे, स्पेशली क्योंकि चंद जो घंटे हैं आने वाले वो काफी अहम है। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।